Good evening, one and all. Let us begin with the orientation program. I asked for wisdom, the world gave me problems to solve. I asked for courage, and the world gave me danger to overcome. I asked for love, and the world gave me troubled people. I asked for favors, and the world gave me. I asked nothing I wanted, but I received everything I needed. The modified code teaches us how we can convert our challenges we face into our opportunities and our achievements. I hope you all are geared up for this session. It's a very kind request to all my dear students. Please fill registration form, which is already there in the comment box and description box. Please fill out. And if you have already done, please ignore. Okay. Once again, good evening and a warm welcome to one and all. I, Professor Preeti Mangtani, take this opportunity to heartily welcome you all on this orientation program organized by Department of Banking and Insurance and Department of Management Studies. I would like to welcome our Principal Madam, Dr. Jyoti Pohane, Vice Principal, Dr. Avinash Endre Sir, and Junior College Vice Principal, Professor Nutan Patil, and DNI Coordinator, Professor MS Coordinator, Professor Sneha Matre, and to all my dear colleagues and dear participants. Let us proceed by calling our interviewers, our Principal, Dr. Jyoti Pohane Madam, to come forward and deliver the welcome address and views on this occasion. Jyoti ma'am, over to you. Thank you, Preeti Madam. On behalf of Thane Jilla Agri Shikshan Prasarak Mandals, Pragati College of Arts and Commerce, I welcome Junior Vice Principal Nutan Patil Madam, Coordinator of BBI Swati Pusarkar Madam, Coordinator of BMS Sneha Matre Ma'am, and all my teacher colleagues, as well as all dear students. Today we have organized this orientation program to know what are the opportunities or what are the future prospects which you will find in the Pragati College campus. In our college, we are having the education right from 11th standard up to doctorate level. We are having 11th and 12th Arts, Commerce and Science faculty. As well as in degree college, we are having Arts, Commerce and Science faculty. Regular arts is there, regular commerce is there, along with that we have banking and insurance, Department of Management Studies and BSc IT also. In PG, we are having MA Economics, we are having MCom in Advanced Accountancy, we are having PhD in Commerce and PhD in Economics. So, if a student enter the Pragati College campus in 11, if he wish, he can become doctor and then leave the campus. So many other courses, supportive courses, certificate courses are also there. Every year we are trying to give these courses to the students for their overall development. So today we have organized this orientation program to make you aware that what you will get in our campus, what are the opportunities that you can grab and make your future through Pragati College of Arts and Commerce. It's our college as you are our students. So this orientation program is organized whereby you will get an idea what you can do after your 12th. I once again congratulate you for having successfully completed your 12th standard. So major tension in education is now over. Now you have to choose your path which you will like, the subjects which will be of your liking, that you will be taking ahead and you can excel in that. So our college teaching and non-teaching staff is always supportive to the students, and here onwards also, if we wish to continue with our
college, then you will be given all the help, all the support, all the guidance, which will make your future bright, as well as the name of the college will also be in fame. So once again, I welcome all of you and also congratulate all of you for completing your HSC. And I request Preeti ma'am to continue with. Thank you so much, madam. Thank you once again. Now I would like to request our BNI coordinator, Professor Swati Pusalkar, to please guide us on this occasion. Hello everyone, I would like to introduce myself. I am Swati Pusalkar, coordinator of the Department of Banking Insurance. Am I audible? I am clearly audible to everyone? Yes, ma'am. Yes. So at the outset, I would say thanks to our principal, Dr. Jyoti Pohane madam, for guiding us, and my special thanks extended to Vice Principal of Junior College, Professor Nutan Patil madam, because since morning she is helping me in and out for the preparation of this, for the organization of this program. So thank you, Nutan madam. Now, dear students, नॉर्मली हम लोग जब बहुत साल से ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते आ रहे हैं, वो होता है कॉलेज में. दिस ईयर ओनली वी हैव गॉन ऑन टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. सो दिस इज न्यू टू अस एज वेल एज आवर स्टूडेंट्स. हर साल बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन रहता है कि बैंकिंग इंश्योरेंस या BMS क्या है. इज इट अ कोर्स लाइक कंप्यूटर कोर्स? तो ये कंफ्यूजन मैं पहली चीज ये कंफ्यूजन मैं दूर करना चाहती हूँ. बेसिकली जैसे हम लोग BCom या BA या BSc डिग्री परस्यू करते हैं, वैसे ही BMS या BNI ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है. These specialized degree programs were introduced by university in the year 2001, and in the same year our college, Pragati College, had started the same. So BNI या BMS ये कोई कोर्स नहीं है, ये BCom, BA या BSc जैसा एक डिग्री प्रोग्राम है. अभी इस प्रोग्राम्स को मैं स्पेशलाइज्ड डिग्री प्रोग्राम्स क्यों बोल रही हूँ? जैसे कोई स्टूडेंट BSc करता है, बट वो BSc कैसे करता है? BSc इन केमिस्ट्री. इसका मतलब क्या है? उसने केमिस्ट्री एज अ स्पेशल सब्जेक्ट लिया था अपने ग्रेजुएशन के लिए या अपने डिग्री के लिए. वैसे BNI में आप BCom करते हो, बट बाय टेकिंग द स्पेशल सब्जेक्ट. जब कोई बच्चा BMS करता है तो उसका मतलब क्या है? ही इज ऑल्सो परस्यूइंग बैचलरेट डिग्री इन द एरिया ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज. तो स्टूडेंट्स पहले अपना ये कंफ्यूजन टोटली क्लियर करो कि BNI या BMS ये कोई कोर्स नहीं है. इट इज अ डिग्री, यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड डिग्री, बट विद स्पेशलाइजेशन. आई थिंक आई हैव क्लियर्ड दिस कंफ्यूजन. नाउ आई वुड लाइक टू गो अहेड विद द सेकेंड प्रॉब्लम. बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि मैडम BNI का फ्यूचर में क्या स्कोप रहेगा, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगा क्या, हम लोग फर्दर स्टडीज परस्यू कर पाएंगे क्या. Before I brief about my BNI course, I would like to answer all these questions first. So BNI का स्कोप क्या है? आज अगर बैंकिंग सेक्टर को आप देखते हो तो बैंकिंग सेक्टर बहुत ही बढ़ गया है. वो इतना बढ़ गया है कि आज आप किसी भी लेन में जाओ, आपको किसी बैंक का ATM सेंटर या किसी बैंक का ब्रांच मिलेगा. मैंने ये पैंडेमिक सिचुएशन में ये भी ऑब्जर्व किया है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी की डिमांड काफी बढ़ गई है. आज डिजिटल बैंकिंग की वजह से हम लोग घर बैठे पैसों की लेन देन कर सकते हैं. लोग गांव में रहने वाले हो या सिंपल हाउसवाइफ हो या किसी बड़े कंपनी का CEO हो, हर कोई बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है.
आप कभी भी बैंक या इंश्योरेंस को अपने लाइफ से सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते थे। तो इसका मतलब ये है कि दोनों सेक्टर आगे भी कंटिन्यू रहेंगे और उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज भी रहेंगी। अगर आपको बैंकिंग या इंश्योरेंस में अपना करियर करना है तो आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, स्किल्स होने चाहिए। एंड आई थिंक बीकॉम बैंकिंग इंश्योरेंस डिग्री कोर्स सर्व्स दिस पर्पस। क्लियर टू एवरीवन? नाउ सेकेंड थिंग, बच्चे ये पूछते हैं कि मैडम हम लोगों को जॉब मिलेगा क्या? अभी जॉब का गारंटी मैं नहीं दे सकती, बट मैं ये इतना जरूर कह सकती हूँ कि जो स्टूडेंट इस डिग्री को सीरियसली लेगा उसको बैंक में क्या, इंश्योरेंस में क्या, अगर आप प्राइवेट कंपनी में जाते हो, पब्लिक सेक्टर कंपनी में जाते हो, पार्टनरशिप फर्म में जाते हो, आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब आराम से मिल सकती है। क्योंकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैंने अभी लिया वो सारे ऑर्गेनाइजेशन बैंकिंग या इंश्योरेंस सेक्टर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी परस्यू करना चाहते हो तो यस, बैंकिंग इंश्योरेंस डिग्री इज अ एलिजिबल डिग्री फॉर ऑल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स लाइक एमकॉम, एमबीए, सीए, आईसीडब्ल्यूए एटसेट्रा। अगर कोई स्टूडेंट बैंकिंग एग्जामिनेशन देना चाहता है, अगर उसको यूपीएससी के लिए या एमपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना है तो मैं ये डेफिनेटली कहूंगी कि बीकॉम बैंकिंग इंश्योरेंस सिलेबस क्रिएट द बेस फॉर दिस प्रिपरेशन। Now, I would like to explain what is BCom B&I degree course. So basically, this is just like a 3-year program course as BCom. It has a semester pattern and its exam pattern is 75-25. 75-25 मतलब क्या? अब तक आप 100 मार्क्स का एग्जाम देते आ रहे हो, बट B&I में आपको 75 मार्क्स का रिटर्न एग्जामिनेशन देना है और 25 मार्क्स, रिमेनिंग 25 मार्क्स आपको इंटरनल टेस्ट के परफॉर्मेंस पर या आपके प्रेजेंटेशन के परफॉर्मेंस पर दिए जाएंगे, अवार्ड किए जाएंगे। अगर B&I करने वाला बच्चा इंडस्ट्री रेडी होना चाहता है तो मेयर एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज नॉट सफिशिएंट, यू नीड टू डेवलप सॉफ्ट स्किल्स। तो B&I के बच्चों को सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा का? यस, डेफिनेटली। आवर डिपार्टमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग न्यूमरस एक्टिविटीज थ्रू आउट द डे। प्रोजेक्ट करने के लिए गाइड भी करते हैं। सिंस लास्ट मेनी इयर्स we have been organizing industrial visit. Basically, what is the purpose behind industrial visit? So that students should understand what is the difference between classroom learning and industry reality. Production ये एक concept है। इस concept को क्लासरूम में पढ़ना, उसका रट्टा मारना और एग्जाम में लिख के मार्क्स अर्न करना बहुत ही सिंपल दिखता है, बट जब हम रियलिटी में प्रोडक्शन क्या है, किसी कंपनी में जाके प्रोडक्शन क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, प्रोडक्शन कैसे होता है, ये लाइव देखते हैं, तब इट इज लाइफ एनरिचिंग एक्सपीरियंस. So these kinds of life enriching experiences we are giving through industrial visit. I think due to time constraint, I will not be elaborate all the activities that we have been organizing throughout the year. Whatever I have said just now, it is just the tip of iceberg. But I think all these activities makes our students ready for the campus placement. हर साल अपना कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव भी ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें हमारे बच्चे बिफोर डिग्री सर्टिफिकेट आर रिक्रूटेड इनटू द रेप्यूटेड कंपनी. So this was just briefing about B&I course. Before I proceed this session to my colleague, I would like to tell you कि you should join B&I course in our college. बहुत सारे बच्चों को ये क्रेज रहता है कि थाने ऑनवर्ड्स कॉलेज में जाएंगे और B&I कोर्स करेंगे या BMS कोर्स में करेंगे. बट डियर, मैं आपको यही एक बात बताना चाहती हूँ कि जो क्वालिटी आपको थाने ऑनवर्ड्स कॉलेज में मिलेंगी ना, उससे बेटर क्वालिटी
आप लोगों को अपने कॉलेज में मिलेंगी. So I urge all the students to join BNI, BMS and BSc IT course in our college only. अगर किसी बच्चे को या किसी स्टूडेंट को BNI के कोर्स के बारे में क्वेरी है या डाउट है या क्वेश्चन है, तो हम लोगों ने 2 व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी क्रिएट किए हैं. अगर आप BNI के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज ज्वाइन सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएटेड फॉर BNI. अगर आप BMS के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज ज्वाइन BMS ग्रुप. So I think I should conclude my briefing, and now I would like to request my colleague Professor Sneha Matre Madam, coordinator of BMS, to continue the session. Thank you. Thank you so much, ma'am. Now I'd like to request Sneha Matre Madam, coordinator of Department of Management Studies, to guide us on this occasion. Thank you, Kriti ma'am. Thank you, Swati ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Yes. Good afternoon to one and all. Myself, Sneha Matre from the BMS department. I am here to give you the clear idea about the BMS course. Moving ahead, I would like to congratulate all the students for successfully clearing their HSC examinations. Here, I would like to give you the idea regarding the BMS course. लेकिन BMS ये कोर्स पूरा डिटेल स्टार्ट करने से पहले I have divided the BMS जैसे आपको पूरा आइडिया मिल सके. तो what I have done, first I will give you the idea regarding what is the course, देखिए कोर्स क्या होता है. सेकेंड, आपको ये कोर्स करने से एज एन स्टूडेंट आप में क्या डेवलपमेंट होंगे, एंड देन व्हाट आर द कॉलेजेस और व्हाट कॉलेजेस एंड द फैकल्टीज डू in these courses for upgrading you, and third, what are the benefits when you joined as a BMS student, and what are the various job opportunities you will get when you join these courses. First, starting with the BMS, its full form is Bachelors of the Management Studies. It is a professional course and have a lot of value in the today's corporate world. Now, let you know, it is a 3-year degree course. ये 3 साल का डिग्री कोर्स होता है. Now there may be questions कि मैम ये सिमिलर है क्या प्लेन बीकॉम कोर्स के जैसा? तो मेरा आंसर है नो, इट इज नॉट सिमिलर. तो व्हाट इज द डिफरेंशिएट? फर्स्ट आपको एक आइडिया देती हूँ कि ये जो कोर्स है, ठीक है, जो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज बोले जाते हैं, वो क्यों मीन्स एस्टैब्लिश किए थे, फिर क्यों ये फॉर्म किए थे. There was a need from the corporate that they require the students which may be having the idea regarding the industries. So industries, how they are working, what is the pattern of working there, what is the culture. तो ये सारी चीजें का आइडिया होना चाहिए स्टूडेंट्स में, इसीलिए कॉर्पोरेट ने ये नीड दिया यूनिवर्सिटीज को, एंड एज पर दैट द यूनिवर्सिटीज हैज फॉर्म दिस सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज. तो ये जो कोर्सेज है, दे आर बीइंग हैविंग देयर ओन आइडेंटिटी. BNI is known for its banking and insurance. BMS is known for the management courses, and BSc IT is known for its IT specialized courses. As a net, ये डेवलप हुआ था कॉर्पोरेट वर्ल्ड के नीड के हिसाब से. नाउ स्टार्टिंग विद दैट, देयर इज 3-year कोर्स. फर्स्ट ईयर में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स और क्लैरिटी क्लियर किया जाता है. किसके बारे में? तो मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके बारे में, जो वेरियस very important in the BMS. Internship, that means you have to join the organization where the Pragati College as a campus placement of BMS department, what they do with, they will follow the industries, and then your interviews will be lined. For 45 days, you will be working in those organizations. अब जिस organization में काम करोगे, उसी के बेस के ऊपर, उसी के टॉपिक के ऊपर जहाँ पे आपने जो काम किया था, उसको ही उसके बेसिस के ऊपर आपको प्रोजेक्ट करना पड़ता है. दैट इज इन TY. देन टॉकिंग अबाउट द थर्ड ईयर इज मोर स्पेसिफिक, जहाँ पे आपको जितने भी आपके जो अपने स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट किया रहता है उसके बारे में आपको डिटेल्ड आइडिया मिल जाता है. मीन्स यू गेट स्कोप ऑफ दोज स्पेशलाइजेशन, यू गेट एक्सपोजर. मतलब
अभी मुझे इन जनरल अगर मेरे को ये 3 ईयर अगर कोलैबोरेट करके बोलना है तो आप क्या करते हो ये कोर्स में, द व्हाट आइडिया यू गेट, तो यू गेट एक्सपोजर ऑफ द कॉर्पोरेट कल्चर. सेकेंडली, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस में जो क्राइसिस होते हैं, हाउ टू एनालाइज दोज क्राइसिस, हाउ टू सॉल्व इट, and what strategies organizations actually utilize it. That is being learned here in this course. Then moving toward the development, means as a student what development will be there. Then it will be developed like your soft skills and the hard skills. Now how it will be developed? It will be developed by the colleges. How? Then there are the certain activities which are being conducted, like group discussions, case studies are being there, extempos, PPT, projects where you actually have to visit the industries, then industrial visit, pride, various inter-college activities. These are the various activities which the Pragati College also organize, and where as a student you also participate in other colleges, which leads to develop your team skills, your stage fear is being reduced, communication skills is being increased, attitudes, your leadership, and all this. And now there are many skills which will develop them. Then talking about the benefits after doing the self-financing courses. So what, or either BMS specifically, what the benefit as a student you get? You become versatile. वर्सेटाइल इन टर्म्स ऑफ आपको सारी चीजों के बारे में, मतलब जितना भी फॉर्म में जो भी एरियाज होते हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको मिल जाता है, सो दैट यू कैन वर्क इन एनी इंडस्ट्रीज. Then it is alternative to BBA courses, that is Bachelor's in Business Administration, which is being offered by the Pune University. Then better salaries will be offered to you. Then further higher studies, अगर आपको आगे और studies करना है तो that is like MBAs, MMS, PGDM, MCA. This higher studies also you can pursue as a BMS as the base. Then jobs opportunities, ये तो एक बहुत important एक criteria रहता है कि भाई ये करने के बाद में मुझे jobs कहाँ पे मिलेंगे. Jobs, आप कोई भी course करो तो आपको jobs मिलेंगे, but it's like what BMS more give to you is that at any area, that is majority in admin area, marketing area, logistics, HR, sales, financial, these are the various area where you can work because you have been developed yourself in such kind of activities are being given. You can do the jobs in majority of the areas. I think that I may be clear with some because just due to the short of time, I have just given you the clear idea regarding the BMS course. At the last, I just want to say, it is the best course to do. I'm not saying that it is just because as a management, there is a BMS department, but I just want to say you as, because if you want to seriously get into the management, then you can start your career, or either you can select the BMS course and all others. And even at the last, hello, I can also say that people, hello, Yes, ma'am. yes. At the last, I just want to add it. Hello. Yes, ma'am. Yes. So, if you have been decided on doing the BMS, or either if you have any doubts with respect to it, so please, the WhatsApp group has been created. So you can put the queries on those groups so that we can guide you. Preeti ma'am. Yes, ma'am. Over to you. Thank you so much, ma'am. Before we proceed with the formal vote of thanks, I would like to thank you all for your patient listening. Hope you all are benefited and in a better position to decide now which course to join. One important announcement is there for you all. 2 different groups are being made. Separate groups 2 बनाए गए हैं. One for BMS and one for BBI. तो किसी को भी अगर कोई भी क्वेरी है रिगार्ड्स टू BMS और BBI, वो लिंक पे क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर सकता है और अपने क्वेरीज पुट अप कर सकता है. थैंक यू सो मच. Now I would like to proceed with the formal vote of thanks.
I would like to request Tarveen ma'am to propose formal vote of thanks. Thank you, Preeti ma'am. I wish you very good afternoon to the Honorable Principal Ma'am, Dr. Jyoti Pohane, respected Vice Principal, Dr. Avinash Shendure, Junior College Vice Principal, Professor Nutan Patil, DBI Coordinator, Professor Swati Usarkar, PMS Coordinator, Professor Sneha Matre, beloved teachers, parents, and my dear students. I, Professor Tarvin Bindra of Pragati College of Arts and Commerce, Dombivli East, regard this as an honor and privilege to extend vote of thanks. Once a great man said, feeling gratitude and not expressing it in wrapping a present and not giving it. Today, I take this opportunity to put all my gratitude in the form of words. I thank our respected chairman, Sri Jagannath G. Patil Sahib, and the management members who always grate us with their support and guidance. We have been fortunate enough to be backed by our loved principal ma'am, and you have been in constant support and gave us a lot of encouragement. Thank you, ma'am. I also wish to express my gratitude to Junior College Vice Principal, Professor Nutan Patil ma'am, for being so kind and supportive to us. I thank all the parents and the students for the presence. This known you are encouraging always to help us important events like this, as no program could be handled single-handedly. Therefore, I thank Swati ma'am and Sneha ma'am for their cooperation and coordination. I thank Nikhil sir for his technical support. I thank Tanya ma'am for her wonder words. I thank Preeti ma'am for her best host. I extend my sincere thanks to Hema ma'am and Namrata ma'am for the extending jobs. Last but not the least, I thank all the students for showing their interest in this program. I once again thank everyone for making this program successful, and heartiest congratulations to all the aspirants. Thank you, dears. Thank you so much, ma'am.